discussed about the financial statements, its nature, importance, and limitations. Firstly, introduction. The main purpose of accounting is to ascertain the profit and loss sustained by a business. Zoom करें ना, क्लिक करो और इधर पर कर दे, zoom करें ना, हाँ इस तरह का zoom करो और करें, हाँ ठीक है बेटा, जे हो सकता है भी कर ठीक है, हाँ ठीक है बेटा. The main purpose of accounting is to ascertain the profit and loss sustained by a business concern during a specific period, normally 1 year, and also to know the extent of assets and liabilities possessed by a business concern at any point of time. Main purpose accounting ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ascertain ਕਰਨਾ business ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ profit ਹੋ ਰਿਹਾ, कितना लॉस हो रहा एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग अ 1 ईयर एंड बिजनेस के एसेट्स किन्ने लाइबिलिटीज किन्नियां ने ड्यूरिंग अ 1 ईयर एक फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आप देखना हुंदा अकाउंटिंग दे विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मेन पर्पस है आप बिजनेस के प्रॉफिट्स ते लॉस नूं देखनागा कि एक 1 ईयर के ड्यूरिंग किन्ने प्रॉफिट्स ते लॉसेस हो रहे ने बिजनेस के किन्ने एसेट्स ते किन्ने लाइबिलिटीज ने as these statements provide the financial results of any business, so they are called final accounts. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ statements ਨੇ business ਦੇ final results provide ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ statements ਨੂੰ final accounts ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ. Next, its meaning. The financial statements are summarized reports of accounting transactions. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने ये समराइज्ड रिपोर्ट्स होंदे ने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस दे जिन्नियां एक पीरियड दे ड्यूरिंग जो भी ट्रांजैक्शंस होईयां ने उन्हां सारियां नूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे विच रिकॉर्ड कर लिया जांदा उन्हां नूं समराइज्ड रिपोर्ट्स हुंदियां ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारियां अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस दियां they are prepared for the purpose of presenting a periodic report. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ਨੂੰ प्रिपेयर किया जाता है एक पीरियडिक रिपोर्ट शो करने ਲਈ ਇਹ बिजनेस की प्रोग्रेस ਨੂੰ शो करती है प्रोग्रेस कितनी हुई है बिजनेस की या बिजनेस ਨੂੰ लॉस कितने हुए ने made by the management and business concern. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किते आंदियां ने कि मैनेजमेंट द्वारा जो कि प्रोग्रेस रिपोर्ट हुंदियां ने कि बिजनेस कंसर्न दी बिजनेस ਨੂੰ कितने प्रॉफिट्स होए लॉसेस होए बिजनेस दी कितने एसेट्स एंड लायबिलिटीज. Next is definition of financial statements. According to R. Anthony, financial statements are a system of collecting, summarizing, analyzing, and reporting in monetary terms information about an organization. R. Anthony कहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने एक सिस्टम है जिस सारियां जो भी मोनेटरी नेचर दियां पैसे नाल रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस ने उन्हां नूं पहला तक कलैक्ट किया जाता सारियां ट्रांजैक्शंस नूं फिर समराइज किया जाता देन एनालिसिस किया जाता फिर जो भी रिपोर्ट किया जाता सारियां ट्रांजैक्शंस नूं जो भी बिजनेस नाल कंसर्न ने ऑर्गेनाइजेशन नाल रिलेटेड हुंदियां. Next is nature of financial statements. Nature of financial statements ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी financial statements ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ किस ਦੇ इफेक्ट ਪੈਂਦਾ किस ਦੇ अकॉर्डिंग रिकॉर्ड ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. First is recorded facts. The financial statement represents those business transactions that are recorded in the books of accounts. जो भी financial statements ने only वही business transactions ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ books of accounts ਦੇ ਵਿੱਚ record ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ chronological order ਦੇ ਵਿੱਚ sequence wise record ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. With passage of time, these transactions become historical in nature क्योंकि progress the last year the ending ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ but जो transactions ਨੇ ਆਪਾਂ starting ਤੋਂ record ਕਰਨੀਆਂ start ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ transactions historical ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ nature ਦੇ ਵਿੱਚ. The facts which cannot be converted into monetary terms. जो चीज़ों ਨੂੰ ਆਪਾਂ monetary terms पैसे ਦੇ terms ਵਿੱਚ convert नहीं कर सकते however they are important even if चाहे वो transactions ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ important ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ monetary ਦੀ form ਚ convert नहीं कर सकते ਉਹਨਾਂ transactions ਨੂੰ financial statements ਵਿੱਚ record नहीं करांगे.
But nowadays, attempt is made to overcome from this problem by giving footnote below this statement. But ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਫੁੱਟਨੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਫੁੱਟਨੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। Then next one is accounting policies. Accounting policies are the principles, procedures and rules. Accounting policies principles ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ procedures ਤੇ rules ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ which may vary from enterprise to enterprise। ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਹਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। Next one is accounting conventions. Accounting is based on some conventions. जो accounting है conventions पे based होती है। It is a science but cannot be termed as a perfect science like physics and chemistry. Accounting भी science है but आप इन्हें perfect science नहीं कह सकते physics ते chemistry दी तरह। There are many conventions in respect of charging particular expense to profit and loss account and balance sheet. बहुत सारियां conventions से in respect of charging particular expense, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ expense ਨੂੰ charge ਕਰਨਾ ਗਾ profit and loss account balance sheet, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ conventions form ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। The financial statements are comparable only if same pattern of convention have been followed। financial statements ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ compare ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਜੇ financial statements ਲਈ ਆਪਾਂ same type of convention use ਕਰਾਂਗੇ। Even validity of financial statements depend upon validity of convention। Means convention बहुत ज़्यादा most important role play करदियां ने financial statements because जो validity हुंदी है financial statements दी वो validity of convention ते depend करदी है। Next one is personal judgment। The use of financial statement is greatly affected by the personal judgment। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਪਰਸਨਲ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਬਾਈ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਈਟਮਸ। ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਥਡ ਆਫ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਾਕ ਕਿ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੀਫੋ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫੀਫੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ सिलेक्ट करेगा एप्रिशिएट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अकाउंटेंट सिलेक्ट करेगा कि डेप्रिसिएशन का एप्रिशिएट मेथड की होएगा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है या रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग। देन क्रिएट करेगा प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ते ये भी अकाउंटिंग दी हुंदी है कि ऑब्लिगेशन कि उन्हें जो भी प्रोविजन है बैड डेट्स लिए डाउटफुल डेट्स लिए वो भी क्रिएट करनी है। Then making distinction between capital and revenue expenditure। जो भी अकाउंटेंट है वो डिस्टिंक्ट करेगा कैपिटल ते रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन केड़ा एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर दा ते केड़ा रेवेन्यू नेचर दा। then ट्रीटमेंट करेगा इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ते इंटेंजिबल एसेट्स हो गए जिवें गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, इन्हां सारे दा ट्रीटमेंट किस तरह करना। Next one is importance of financial statements। Financial statements are very much important for management, shareholders, creditors, labor, public, government। Then next one is importance to management। Financial statements the management ਲਈ ਕੀ importance है to take decision about business policy। Management ਲਈ financial important बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी मैनेजमेंट ने डिसीजन लेने रिगार्डिंग बिजनेस पॉलिसीज दे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बेसिस ते लेंदे हैं डिसीजन टू टेक डिसीजन अबाउट सेल ऑफ कौन केड़ी चीज किवें सेल ऑफ करनी है ओदा डिसीजन भी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अकॉर्डिंग ही लेंदी है to take decision to right issue. Right issue means if company wants to further issue its share, then company prefer its existing shareholders to issue the shares first. कंपनी ने जो शेयर फर्दर इशू करना चाहती है कंपनी देन वो की कर दिया सब तो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नु प्रेफरेंस दिंदी है कि मैं शेयर्स उन्हां नु इशू करा देन फिर फर्दर पब्लिक नु नोटिस दिंदे आ वो राइट इशू दा डिसीजन भी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अकॉर्डिंगली लेंदी है देन टू टेक डिसीजन टू डिक्लेयर डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर डिविडेंड करना मैनेजमेंट चाहती है कि अपने शेयर होल्डर्स नु डिविडेंड पे करे तो ओदा डिसीजन भी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अकॉर्डिंगली लेगी देन टू कम्युनिकेट देयर परफॉर्मेंस विद डिफरेंट पार्टीज जे मैनेजमेंट चाहती है कि अपनी जो भी उन्होंने परफॉर्मेंस है कि तरह बिजनेस परफॉर्म कर रहा तो ओदी इन्फॉर्मेशन उन्हें डिफरेंट पार्टीज नु देनी है देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस भी बहुत हेल्पफुल ने मैनेजमेंट ली नेक्स्ट वन इज importance to the shareholders enable the shareholders to know efficiency and effectiveness of the management जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने इनेबल कर दिंदियां ने शेयर होल्डर्स नु इस तो अपन नु पता चल जांदा मैनेजमेंट किन्नी एफिशिएंसी नाल काम कर रही है किन्नी इफेक्टिवली काम कर रही है मैनेजमेंट वो सारे कुछ अपन नु फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हेल्प तो पता चल जाएगा to know the earning capacity and financial strength of the company कंपनी दी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ किन्नी है या कंपनी दी अर्निंग कैपेसिटी किन्नी है इसदा भी आपां नू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो देख के पता चल जांदा कंपनी इस ईयर च किन्ना अर्न कर रही है करंट ईयर प्रीवियस ईयर च किन्ना अर्न कीता सी कंपनी ने ये सारे कुछ आपां नू पता चल जांदा थ्रू विद द हेल्प ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ते कंपनी दी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की है नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस टू क्रेडिटर्स जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्रेडिटर्स लिए क्यों इम्पोर्टेंट है टू नो द लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ अ कंपनी सॉल्वेंसी पोजीशन मींस कंपनी दे एसेट्स किन्ने एबल ने कंपनी दे लायबिलिटीज नु मीट आउट करन लई फुलफिल करन लई जो भी क्रेडिटर्स ने कंपनी किन्ने क्रेडिटर्स नु पेमेंट कर सकदी है ये जानने लई ये भी हेल्प कर दिया फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प नाल अपन नूं पता चल जाएगा कि कंपनी दे एसेट्स किन्ने ने लायबिलिटीज किन्नी ने कि कंपनी दे एसेट्स एबल ने कंपनी दे लायबिलिटीज नूं पे ऑफ करन च या नहीं to know the liquidity profitability and long term solvency position of a company company ਦੀ liquidity position ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਟਸ ਨੇ liquidity position ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤੇ profitability ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਸ ਅਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ न्यू बिजनेस डील विद न्यू वेंडर्स किवें बिजनेस न्यू डील करे बिजनेस किस तरह न्यू वेंडर्स नाल डील करेगा न्यू वेंडर्स मींस न्यू सेलर्स बिजनेस में न्यू सप्लायर चाहिए होंदे ने जो बिजनेस दे विच प्रोडक्ट्स नू क्या सप्लाई करन इसलिए ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प नाल पता चल सकदा गा न्यू सप्लायर्स भी फिर इंटरस्टेड होंगे जे कंपनी दी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी देन न्यू सप्लायर चाहणगे कि डील करन कंपनी नाल वो भी अपने प्रोडक्ट्स के बेटर प्रोडक्ट्स के कंपनी नू देन ताकि कंपनी अगे उन्हां नू सेल ऑफ कर सके ते इस नाल भी कंपनी दी जो भी हेल्प है सप्लायर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हेल्प नाल न्यू सप्लायर्स भी के बिजनेस दे विच इंट्रोड्यूस हुंदे डील करते हैं Next, importance of financial statements for labor. Workers' bonus depend upon the size of profit. जे business ਨੂੰ profits हो रहे ने बहुत ज़्यादा तो then उन्होंने जो workers ਨੂੰ business के bonus भी pay करते ने
जे प्रॉफिट्स नहीं होंगे दैन बोनस भी नहीं पे करेंगे। इस करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाल ही पता चलदा कि बिजनेस ਨੂੰ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जे इन केस जो प्रॉफिट हो रहा है दैन बिजनेस के जो मैनेजमेंट के अपने वर्कर्स ਨੂੰ बोनस प्रोवाइड करती है। Next one is company's current financial position to pay off employees salaries and wages। कंपनीज दी करंट कंपनी दी जो करंट पोजीशन है कि अपनी जो वर्कर्स ने इंप्लॉइज ने उन्होंने कितनी सैलरी ते वेजेस पे करूगी वो भी सब की है अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प नाल पता चल सकता है क्योंकि उस आप शो करते हैं कि कंपनी ने अपने सप्लाई अपने जो भी लेबर है वर्कर्स है इंप्लॉइज है उन्होंने कितनी सैलरी ते वेजेस पे की है। Then next one is company's future prospect to work with them। कंपनी दा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की है टू वर्क विद देम अपने लेबर ना किस तरह कंपनी वर्क कर रही है कि कितना का प्रोस्पेक्ट है। जे कंपनी दे लेबरर्स बहुत अच्छा वर्क करेंगे देन कंपनी दी फ्यूचर च ग्रोथ होएगी लेबर कॉस्ट भी घट पेगी इहदे नाल जो कि कंपनी के फ्यूचर च भी ग्रोथ करेगी। इस नाल लेबर कॉस्ट भी घट पेगी इस करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Next one is importance to the public। Financial statements की key importance है publicly। Business is a social entity। Business के एक social entity है। Business का भी कुछ समाज प्रति सोसाइटी प्रति उन्होंने भी भी कुछ क्या responsibilities दी क्या जो business ਨੂੰ perform करने पैंदे ने। They have to take part in public sector। Business ਨੂੰ भी public sector ਦੇ ਵਿੱਚ part लेना पैंदा। Next कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। बिजनेस की भी अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर प्रति क्या कुछ रिस्पांसिबिलिटीज ने जो बिजनेस में परफॉर्म करने फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इनोसेंट पब्लिक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करके जो भी पब्लिक ਨੂੰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਸਸ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਦੈਨ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਵਨ ਇਫ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਜੋ ਵੀ कंपनी के उन्होंने फ्रॉड कर रही है। ठीक है इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिकली। इसके इम्पोर्टेंस टू गवर्नमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इम्पोर्टेंस है गवर्नमेंटली। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि फिर ही पता चलेगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर राइज कर रहे हैं ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंटली जानना कि फाइनेंशियल पोजीशन की है बिजनेस की। Government is interested in financial statements and account of taxation। Government भी interested in their financial statements on account of taxation क्योंकि government ने के taxes लेने होंगे ने business organization तो business concern तो tax लेने government इसलिए government भी देख दिया कि business के financial statements ਨੂੰ check कर दिया कि उस according then फिर क्या taxes charge करते ने business तो। Next one is government institutions which provide loans to the concern are interested in these statements। कोई भी government institution ने जो कि loan provide कर दे concerns ਨੂੰ वो interested ਹੁੰਦੇ ਨੇ in these statements। उन्होंने भी देखना ਹੁੰਦਾ कि जो भी statements ने business concern ने बनाए ने उन्होंने किस तरह ਦੇ ਨੇ उन्होंने किन्ने profits ने losses ने किन्ने assets ने किन्ने liabilities है। Then next one is limitations of financial statements। Financial statements के इन्ने benefits के बाद financial statements के कुछ limitations भी ने। First one is historical nature। Financial statement contain the information which tells about what has happened in the past। Financial statements वो information होती है जिस दे नाल अपन पता चलदा कि past विच की happen होया सी।
पहले ट्रांजैक्शंस ਨੂੰ ਰਿਕਾर्ड करना स्टार्ट कर देने दे रिजल्ट ਆਪਾਂ ਨੂੰ एट लास्ट मिलता है ईयर एंडिंग ਤੇ मिलता है इसलिए जो भी ट्रांजैक्शंस ने वो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पास्ट वाले दसदे ने पास्ट ਵਿੱਚ कितनी सेल हुई है कितनी परचेज हुई है इसलिए जो ये वाली ट्रांजैक्शंस ने हिस्टोरिकल ਹੁੰਦੇ हैं नेचर they are prepared on the basis of historical cost when the transaction occurred जो ट्रांजैक्शंस ये सारियां हिस्टोरिकल कॉस्ट ਦੀ बेस ਤੇ प्रिपेयर ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ट्रांजैक्शन ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਅਕਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ट्रांजैक्शन It records business transaction when they takes place and the result of transaction is based on the data. ये record करते हैं business transactions जो when they takes place जो दो transaction होती है उसी time record नहीं करती हैं but जो भी business transaction है firstly उन्हें record कर लिया जाता है ना vouchers वगैरह दी form दे विच and the result of transaction is based on the data which is recorded in the past ਤੇ ਜੋ financial statement ਦਾ ਜੋ ਵੀ result ਆਂਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀ transaction ਦੇ base ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ past ਚ ਪਹਿਲਾਂ record ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ The figure of purchase and stock may not reflect the true values ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਪਰਚੇਸ ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ under historical accounting system account assets are shown in the books at its acquisition price which is quite low as compared to the market value ਕਿੰਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਲੋ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਪਹਿਲਾ ਫਿਊਚਰ ਚ ਪਾਸਟ ਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੋ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਟਾਕ ਹੈ ਕੁਛ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਡੈਪਰੀਸੀਏਟ ਵੀ ਹੋਈ ਆ depreciation based on historical cost will be less and profit will be overstated ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ profits ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ overstated ਕਰਕੇ show ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ depreciation ਨੂੰ less ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ financial statements ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ effect ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ financial statements ਨੇ based on historical costing system are merely statements of historical facts thus conclusion based on such data may be misleading ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬਸ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਗਨੋਰਸ ਨॉन ਮੋਨੇਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨॉन ਮੋਨੇਟਰੀ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਓਨਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੋਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ which can be converted in terms of money ਓਨਲੀ ਉਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ non-monetary facts are not taken into consideration despite a fact that they have a very important role in operational as well as financial results of the business non-monetary facts ਨੂੰ ਆਪਾਂ consideration ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ even ਚਾਹੇ ਉਹ facts ਕਿੰਨੇ important ਹੋਣ business organization ਲਈ but ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ facts ਨੂੰ ਵੀ ignore ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਜੋ ਵੀ non monetary nature ਦੇ transactions ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ record ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ the qualitative factors do not find any place in financial statements ਜੋ ਵੀ qualitative factors ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ business financial statements ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ place ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ for example ਜਿਵੇਂ loyalty of workers ਕਿੰਨੇ loyal ਹੈ ਆਪਣੇ work ਪ੍ਰਤੀ integrity of management practices of the business ਦੀ ਕਿੰਨੀ goodwill ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ practices ਕਿੰਨੀ ਹੈ business ਦੀ ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਭ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿਸ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦਾ ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪੈਂਦਾ ਬਟ ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ It also ignores contingent assets and liabilities because they are uncertain in character and cannot be depicted in exact monetary value.
जो कंटिजेंट एसेट्स ते लाइबिलिटीज ने उन्होंने भी इग्नोर किया जाता विच कंटिजेंट एसेट्स ते लाइबिलिटीज वो एसेट्स ते लाइबिलिटीज ने जो कि फ्यूचर दे विच मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर च अराइज हो भी सकती है नहीं भी हो सकते हैं करके जो कंटिजेंट लाइबिलिटीज ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने भी इग्नोर कर दिए ने एक क्योंकि अनसर्टन होंदियां ने फैक्टर दे विच ते आपां इन्हां नूं एग्जैक्ट मनीटरी वैल्यू दे विच भी कन्वर्ट नहीं कर सकते इस करके इन्हां नूं इग्नोर किया जाता नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने पर्सनल जजमेंट द्वारा अकाउंटेंट के पर्सनल जजमेंट द्वारा भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होंदे ने इन्फ्लुएंस होंदियां ने the need of reporting requires a great deal of calculations based on judgment of the accountant जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके विच जो भी जजमेंट होंदी अकाउंटेंट दी वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करदी है the accountant has to make personal judgment with regard to method of depreciation accountant ਨੂੰ decision लेने पैंदे regarding कि मैथड ऑफ डेप्रीशिएशन क्या होगा वैल्यूएशन स्टॉक नु किस तरह वैल्यूएट करेंगे या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितनी क्रिएट करेंगे the greater the degree of such estimation required the greater the amount of uncertainty जे आप ज्यादा डिग्री ते मतलब बहुत ज्यादा एस्टिमेशन लगाने हैं तो उन्नी अनसर्टेनिटी भी ग्रेट होती है इंट्रोड्यूस्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट just the quality of इस करके जो quality of financial statements से depend करती है competency of those who prepare such statements जो person इस statements को prepare कर रहा है वो कितना competently prepare कर रहा है financial statements को responsibility ਨੂੰ किस तरह follow कर रहा है ठीक है ਉਹਦੀ जो पर्सनल जजमेंट है उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पैंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ते जो पर्सन अच्छी तरह नहीं रिकॉर्ड कर रहा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्फ्लुएंस होंगे नेक्स्ट वन इज स्टैटिक इन नेचर बैलेंस शीट इज कंसीडर्ड टू बी a static document balance sheet क्या एक static document है as it reflects the financial position of the concern जो बैलेंस शीट है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ਨੂੰ शो कर दी है एट अ टाइम एक पीरियड के दौरान बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की है उसके एसेट्स लायबिलिटीज की ने बट द पोजीशन ऑफ बिजनेस इज अफेक्टेड बाय डे टू डे चेंजेस बट जो बिजनेस की पोजीशन है डे टू डे चेंजेस ना रिफ्लेक्ट होंदी रहंदी है which are not considered जिन्होंने कि considered भी नहीं किया जाता for example जिवे balance sheet fails to predict the impact of full year transactions on the assets and liabilities यानी बैलेंस शीट फेल हो जाती है पर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि इंपैक्ट की होएगा सारे सालियां ट्रांजैक्शंस दा एसेट्स ते लायबिलिटीज के ऊपर there is also possibility of manipulation in the balance sheet due to its limitation कहंदे इस लिमिटेशन करके जो बैलेंस शीट दे कई बार मैनिपुलेशन भी किया जाता उसदे विच गलत ट्रांजैक्शन गलत एसेट्स ते लायबिलिटीज को ऐड आउट किया जाता ठीक है इस नाल ਇਹਦਾ कि बैलेंस शीट दे विच बहुत ज्यादा इफेक्ट पैंदा इसलिए एक ही लिमिटेशन है स्टैटिक इन नेचर Next, ignore real value of assets. As the assets are recorded at cost according to cost concept. जो भी assets ने उन्हां नूं record किया जाता at cost according to cost concept के according. So the fixed assets do not either represent realizable value or replacement value. जो फिक्स्ड एसेट्स ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ that is acquisition price of the assets the acquisition price ਕਿੰਨਾ ਦਾ the real value of assets can only be known when these assets are sold ਇਹਨਾਂ ਦੀ real value ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ assets ਨੂੰ ਕੀ sold ਕਰਦੇ ਹਾਂ so exact position of business can be
gain from the balance sheet। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ, which is considered to be valuation statement। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ valuation statement ਹੀ consider ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ real value of assets नहीं पता चलती। ये भी बहुत बड़ी लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Next one is conclusion। At last we conclude that financial statements are the final accounts prepared by the business concerned at the end of financial year। फाइनेंशियल ईयर ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਸਰਨ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। The preparation of these accounts is beneficial for various persons। ये जो transactions ने बहुत ज़्यादा beneficials ने जिनमें managementally, governmentally, publicly ये सारे internal external users लिए ये सारी transactions की ने बहुत ज़्यादा beneficial नहीं है। Thank you। Thanks Rajni, thanks, very good बेटा। इस तरह लग रहा था जिਵੇਂ कोई फिलोसफर बोल रहा होंगे बेटा, बहुत अच्छे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई tell all people, some people are join later। Today here we get together the series of chain, a 5th online PowerPoint presentation made by Miss Rajni Bala on financial statement, nature, importance and limitation। The presentation is over and बहुत अच्छा से बेटा। Any queries students? Everything is almost clear। Thanks बेटा रजनी बाला, बहुत अच्छी, very melodious voice। इस तरह लग रहा है कोई फिलोसफर बोल रहे हो बेटा। हाँ बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। Now the time to ठीक है मित्तल साहब, nice to now next diamond of PG Department of Commerce, ST College Barnala, Shubham। Shubham recently he got the first prize in online logo competition। He is the winner of online logo competition। I would like to invite Shubham to conclude whole of the activity by Miss Rajni Bala। Over to Shubham। Over to Shubham। Over to Shubham। Good morning everyone, myself Shubham। Hello। हाँ बेटा, audible। Good afternoon everyone, myself Shubham। I am here to conclude all about the financial statements। Financial statements are legal obligations for every business person and he has to prepare his financial statements at the end of accounting year। Financial statements are prepared for the view of ascertain profits and its business position। Financial statements include profit and loss account, trading account and balance sheet। Profit and loss account
tells about the profit earned during the year, and balance sheet tells about the position of business concern. Financial statements are very important for some person like government, owner, and its director, because government collect taxes according to the financial statements, because profits uh, stated in the profit and loss account, profits are stated for earned by the business concern are taxable in the hands of owner of the concern, and owner also wants to know about the profit and loss earned by him and its positions, its financial position. So it is very important for the owner to prepare his financial statements, and creditors also wants to know about the its credit worth, the company कितनी तो able है कि वो जब पैसे ने वो पे कर सके. But फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ਦੀ कुछ लिमिटेशन भी ने जिमें कि पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा ਪਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਵਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ इंक्लूड करते थे, कुछ फिक्स्ड रेट ਤੇ डेप्रिसिएशन वगैरह लेके ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾਵਦਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਟੋਰ ਦੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਵਗੈरह ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ. ਬਟ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਸਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਥੈਂਕ ਯੂ. Thank you, Shubham. Very comprehensive conclusion. Touched each and every point. Thanks, Shubham. Very nice, beta. Now I would like to call upon Miss Komal to provide a vote of thanks as token of love. Over to Komal. Thank you, sir. Good morning to all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this 5th online PowerPoint presentation. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's event a resounding success. First and foremost, I thank our glorious HOD sir who couldn't come due to being busy, but I express my heartfelt thanks to sir for his valuable contribution. I am very grateful to our principal ma'am for her unstinted support, vision, stewardship for this online PowerPoint presentation event. I am very thankful to all our well-wishers, our whole commerce department, for their valuable consideration, guidance, and encouragement in all our efforts. I owe my gratitude to our brilliant professor, Professor Swan Singh, who have worked hard to ensure that this event becomes a memorable success. His able guidance has always encouraged us. I thank him for his kindness, his hospitality, and his continued support. I thanks to Ms. Rajni Bala, our today's eminent presenter, who presents the topic of financial statement analysis in a very uncomplicated, impressive, and in a very constructive manner. Thank you, Ms. Rajni. Last but not the least, I thanks to all the participants for their
cooperating in making this event a resounding success. Finally, I leave you by this inspiring quote. A little progress each day adds up to big results. Once again, I thank you all for your attention. Thank you. Thank you, Komal. So nice of words, beta. बहुत अच्छे. Thanks to all the participants, students, a diamond of PG Department of Commerce, as we call it, Barnala, to take patience, listen, and like a national webinar. इस तरह लग रहा होंगे जिवें नेशनल वेबिनार चल रहा होंगे. तो पर्पस यही सी बेटा एक लेवल बने, कोशिश कर रहे हैं, आई ट्राई माय बेस्ट, बट विदाउट यू नथिंग इज पॉसिबल. एक्टिव ऑडियंस, एक्टिव स्पीकर, active concluder, and so nice grace of word by the thank speech, Komal. Thank you, beta. Thank you. Okay. Now today is over. Next week we meet at management lecture and discuss the cash flow statement. Okay, beta. Okay.